Assalamu alaikum and welcome to Dr. Imran's official. In today's video, we will discuss the trunk muscles. This is the anterior part of trunk, and in today's lecture, we will discuss the basically the location and function of each muscle that is located in trunk region. So if you look at the diagram, first muscle here located just near the shoulder. This muscle is called trapezius muscle. Trapezius muscle basically expands from the occipital to the lower abdominal area and lateral to the spine of scapula. The basic function of trapezius muscle is to move your arm and scapula. Basically, when you move your arm and your scapula forward, backward, this muscles helps your scapula to move and your arm to move. This muscle is called trapezius muscle. Now it comes to the second muscle. This muscle is called pectoralis major. Pectoralis major is located here, just on the upper part of your abdominal area and upper part of your chest. And this muscle basically helps in adduction, rotation, and depression. For example, if you comes close to your body, arms comes close to your body, so this movement is basically done by the pectoralis major. And another movement is that rotational movement. When you rotate your arm, this movement is also done by this muscle and this muscle. And the third movement is called depression. When you depress your shoulder, so this movement is because of pectoralis major. Now we come to third muscle. Third muscle is called pectoralis minor muscle. Pectoralis minor muscle is just located under the pectoralis major muscle. The basic function of pectoralis major is that it helps shoulder to pull downward and forward. Means when you move your shoulder downward and forward, so this movement is caused by basically by the pectoralis minor muscle. Now we comes to the next muscle. Next muscle is called latissimus dorsi muscle. Latissimus dorsi muscle is located is a flat muscle and located just to the posterior part of your thorax, and the basic function of this muscle is that it helps in respiration. So the muscle latissimus dorsi muscle is considered respiratory accessory muscles because latissimus dorsi is considered to be accessory muscle for respiration because it helps in exhalation and inhalation during respiration. The next muscle is serratus anterior. Serratus anterior is just located from your, it extends from your first rib to your eighth rib, and basic function of serratus anterior muscle is to pull scapula towards your thorax. Means when your this part scapula comes close to your thorax, so this movement is basically done by this muscle that is called serratus anterior muscle. Now on this side, this is the last muscle. This muscle is called external abdominal oblique muscle. External abdominal oblique muscle is located onto the outer surface of abdomen, and it extends from rib to the pelvic area, and the main function of this muscle, external oblique abdominal oblique muscle, that it help to twist your trunk. When you twist your trunk right and in left, so this is basically done by this muscle that is called external abdominal oblique muscle, which is located from rib to the pelvis,
and this is the basically outer surface of your abdomen. Now we will discuss this side. In this side on the top, you will see here this muscle located on the top of sternum and clavicle. This muscle is called sternocleidomastoid muscle. The sternocleidomastoid muscle basically helps to tilt your head. When you tilt your head like this, and when you move your neck like this and clockwise, anti-clockwise, all these kind of movements is basically with the help of this muscle. This muscle is called sternocleidomastoid muscle and just located on to the surface of sternum, basically initial superior position of sternum and onto the clavicle surface. Now it comes to next muscle. Next muscle is the internal intercostal muscle. Internal intercostal muscles are located just in the depth of this upper trunk region, and basic function of internal intercostal muscle is that it pulls down your rib cage. So before discussing the intercostal and external intercostal and internal intercostal muscles, these both muscles are basically one is located just beneath the rib, and the another one is on the surface of the rib between the ribs. So both these muscles help in respiration. So the internal oblique muscles are located just in the depth of ribs, and basic function of this muscle is that it pulls down your rib cage. And the another important function of internal intercostal muscles are they help in speech, they help in singing. The another muscle is called here external intercostal muscles. External intercostal muscles are located externally on the surface in between the ribs, and the basic function of this muscle is that it elevates your rib cage, and another important function is that it assists your lungs to expand to take the air. So here we have discussed the external intercostal muscles. There are two basic functions of external intercostal muscles. The first one is that it elevates your rib cage, and when it elevates your rib cage, so the lungs, it helps the lungs to expand to take air. So both these muscles, internal intercostal muscles and external intercostal muscles, are very important for the respiration, taking in and out of air. After this muscle, we will come here in the middle part of abdominal region. This is the middle part of abdominal region, and this muscle is called rectus abdominis muscle. Rectus abdominis muscle is located just in the middle part of your abdomen, and this muscle is also called six pack muscle. And the basic function of rectus abdominis is that it holds your internal organs located like stomach, intestine, all these are internal organs, and it helps to just hold your internal organs and keep your body stable. So this muscle is also called six pack muscle, and we have discussed two function of rectus abdominis here. The first function is that it holds your internal organs, and the second function is that it stables your body. So this muscle is also called six pack muscle. The next muscle is located just lateral side of the abdominal region, and this muscle is called internal abdominal oblique muscle.
internal abdominal oblique muscles found on the lateral wall of your abdomen. And the basic function of internal abdominal oblique muscle is that it helps your abdomen, it helps into your abdominal pressure and other movements of trunk. So we have discussed these muscles, location of these muscles and function of these muscles. If we just repeat in a very short way, so initial first muscle is called trapezius muscle. Trapezius muscle's basic function is that it moves your scapula and it moves your arm. The second muscle is called pectoralis major muscle. Pectoralis major muscle helps your adduction, rotation, and depression of your arm. Then comes pectoralis minor muscle. Pectoralis minor muscle helps your shoulder to pull downward and forward. Then comes latissimus dorsi muscle. Latissimus dorsi helps in respiration. That's why it's considered as respiratory accessory muscle. After latissimus dorsi, there comes serratus anterior muscle. Serratus anterior muscles is just pull your scapula towards your thorax. This is the basic function of latissimus dorsi. And the last one is here, external abdominal oblique muscle. External abdominal oblique muscles help to twist your trunk like this and this. Now, this muscle is called sternocleidomastoid muscle. Sternocleidomastoid muscle basically helps you tilt your head and other movements of neck. Then comes internal intercostal muscle. Internal intercostal muscles basically pull down your rib cage. It helps you in singing. It helps you in speaking, in speech. Then comes external intercostal muscles. External intercostal muscle basically it elevates your rib cage. It elevates your rib cage and expands your lungs to take air in. After this called a rectus abdominis muscle. Rectus abdominis muscle have two main functions. The first one is that it basically holds your internal organs, and secondly it stabilizes your abdominal region. The last muscle is called internal abdominal muscle, oblique muscle. Internal abdominal oblique muscles helps your abdominal pressure and other movements of your trunk region. So these are the muscles we have discussed in brief view, functions, locations, and now I will repeat this lecture in Urdu for our local students. स्टूडेंट्स आज बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रंक रीजन को. ट्रंक रीजन बेसिकली जो हमारा एंटीरियर व्यू है, यानी कि ये गर्दन से लेकर नीचे एब्डोमिनल एरिया तक जो एंटीरियर व्यू है, आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. और आज इस जो ट्रंक का जो एंटीरियर व्यू है उसमें जितने भी जो मसल लोकेट हो रहे हैं उन मसल्स की लोकेशन को और उन मसल्स के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर वी गो. अगर सबसे पहले जो हमारे पास मसल है, दिस मसल इज कॉल्ड ट्रेपीजियस मसल. तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो मसल आ रहा है ट्रेपीजियस मसल है. और ट्रेपीजियस मसल बेसिकली आपके ऑक्सीपिटल एरिया से लोअर एब्डोमिनल एरिया तक जाता है. ऑक्सीपिटल कौन सा एरिया है? ये आपके जो बेसिकली हेड की बैक साइड है, ये ऑक्सीपिटल कहलाती है. और ऑक्सीपिटल से बैक ये जो है ना आपके एब्डोमिनल एरिया तक बैक से होके फिर आगे एब्डोमिनल एरिया तक आता है. और बेसिकली जो ट्रेपेजियस मसल है फिर वो लेटरल स्पाइन की तरफ चला जाता है, यानी कि जो स्कैपुला की लेटरल स्पाइन है, स्कैपुला बैक साइड पे आपके शोल्डर के है बोन, उसकी तरफ भी ये जाता है. तो ये बेसिकली इसकी लोकेशन है. और इसका जो बेसिक फंक्शन है, इट मूव्स योर आर्म एंड स्कैपुला. सो बेसिकली ट्रेपेजियस मसल जो है ये क्या कर रहा है, एक तो हमारे आर्म को, बाजू को, और दूसरा हमारे स्कैपुला को, यानी कि जो शोल्डर और बाजू का जो रीजन है
इसके अंदर जो मूवमेंट आ रही है ये बेसिकली जो है ये किसकी वजह से आ रही है, ट्रेपेजियस मसल की वजह से आ रही है। उसके बाद सेकंड पे हम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है चेस्ट के बिल्कुल यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसको हम पेक्टोरालिस मेजर मसल कहेंगे। और पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है ये अपर जो पार्ट है बेसिकली चेस्ट का वहां पे लोकेट होता है। और जो पेक्टोरालिस मेजर है इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन पेक्टोरालिस मेजर का क्या है, बेसिकली एडक्शन, बॉडी को जब ऐसे क्लोज आप लाते हैं बाजू को, तो ये जो मूवमेंट होती है बेसिकली पेक्टोरालिस मेजर की वजह से हो रही है। सेकंड मूवमेंट इसकी डिप्रेशन है। डिप्रेशन मींस नीचे की तरफ जाना, जब आप कंधे को ऐसे ऊपर के बजाय नीचे लेके जाते हैं तो ये बेसिकली डिप्रेशन है। और थर्ड जो मूवमेंट इसकी है वो रोटेशनल मूवमेंट है, यानी कि बाजू को आप जब रोटेट करते हैं तो वो बेसिकली जो मूवमेंट है ये भी पेक्टोरालिस मेजर की वजह से आ रही है। अब हम इसके बाद आते हैं पेक्टोरालिस माइनर की तरफ। और पेक्टोरालिस माइनर मसल जो है ये बेसिकली पेक्टोरालिस मेजर ऊपर होता है, और इसको जब हम डायसेक्ट करके नीचे जाते हैं तो नीचे जो इसके मसल बीनीथ बिल्कुल इसके नीचे पड़ा होता है वो पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है। और पेक्टोरालिस माइनर मसल जो है ये बेसिकली क्या करता है, हेल्प्स योर शोल्डर डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये पेक्टोरालिस माइनर जो है आपके शोल्डर को डाउनवर्ड और फिर फॉरवर्ड, यानी कि आप डाउनवर्ड शोल्डर को लेके जाते हैं फिर फॉरवर्ड लेके जाते हैं, तो ये बेसिकली जो मूवमेंट होती है ये पेक्टोरालिस माइनर की वजह से होती है। अब उसके बाद जो मसल आता है हमारे पास लेटिसिमस डोर्साई मसल आता है। और लेटिसिमस डोर्साई मसल जो है ये फ्लैट मसल होता है। और ये मसल जो है बेसिकली आपका जो पोस्टीरियर रीजन है थॉरैक्स का, यानी कि जो पोस्टीरियर साइड की तरफ बैक साइड की तरफ जो रीजन जाता है यहाँ फ्रंट से बैक साइड की तरफ, यहाँ पर वाक़ होता है। और ये जो लेटिसिमस डोर्साई है इसका बेसिक जो फंक्शन है इसको रेस्पिरेटरी एक्सेसरी मसल्स कहा जाता है। कि एक्सेसरी मींस कि ये बेसिकली जो रेस्पिरेशंस है उसमें हेल्प आउट करता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हेल्प आउट करता है, दैट्स व्हाई इसको रेस्पिरेटरी एक्सेसरी मसल्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं अगले मसल पे, दैट इज कॉल्ड सीरेटस एंटीरियर मसल। अब जो सीरेटस एंटीरियर मसल है ये बेसिकली ओरिजिनेट होता है किससे जी, पहली रिब से लेकर 8वीं रिब तक, यानी कि जो पहली पसली है फर्स्ट रिब है वहां से ये ओरिजिनेट होगा और नीचे 8वीं पसली तक आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सीरेटस एंटीरियर मसल कहेंगे। तो सीरेटस एंटीरियर का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, पुल स्केपुला टुवर्ड्स द थॉरैक्स, यानी कि ये जो आपका स्केपुला है उसको मूव किधर कराएगा, टुवर्ड्स द थॉरैक्स, आपके थॉरैक्स की तरफ। यानी कि ये अब मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर स्केपुला को मैं ऐसे अंदर की तरफ लेके आऊंगा तो ये थॉरैक्स की तरफ स्केपुला आ रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, ये सीरेटस एंटीरियर की वजह से हो रही है। अब सीरेटस एंटीरियर के बाद फिर हम आ जाते हैं एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल। अब ये एब्डोमेन के बिल्कुल एक्सटर्नल साइड पे लोकेटेड है। तो ये बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ एब्डोमेन है, यानी कि बेसिक इसकी जो लोकेशन है ये एब्डोमेन की आउटर सरफेस है। और इसका जो बेसिक जो फंक्शन है और इसकी लोकेशन को अगर हम देखें तो ये जो आखिरी रिब्स है वहां से ये एक्सटेंड होके नीचे पेल्विस तक आता है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है ये ट्रंक को ट्विस्ट करने में हेल्प आउट करता है। बेसिकली आप जब ये मूव करते हैं और फिर इस तरफ मूव करते हैं तो ये बेसिकली जो मूवमेंट ये आप कर रहे हैं ये बेसिकली जो ट्रंक के ट्विस्ट कर रहे हैं ट्रंक को, तो ये जो मूवमेंट है ये एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल की वजह से आ रही है। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे। इस साइड पे सबसे टॉप पे आप देखें तो यहाँ पे स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल आपको नजर आ रहा है। अब स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड जो है ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये आपकी जो स्टर्नम बोन है यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और फिर आपकी जो क्लेविकल है इसकी सरफेस को भी साथ साथ टच कर रहा है। तो ये इन दो बोन्स को कवर कर रहा है। और बेसिकली जो बेसिक फंक्शन है स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड का वो आपकी जो हेड एंड नेक मूवमेंट है, बेसिकली टिल्ट कहते हैं। अब ऐसे अगर मैं गर्दन हेड को कर लूं तो ये टिल्ट हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड की वजह से है। फिर इसी तरह अगर नेक की हम मूवमेंट कर लें लेफ्ट राइट और इसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सारी जो मूवमेंट कर लें ये स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड की वजह से आएगी। फिर उसके बाद अगला जो मसल हमारे पास आ जाता है वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल आ जाता है। अब यहाँ पे
जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। दोनों का बेसिक जो फंक्शन है ये रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं। टेकिंग इन ऑफ एयर, टेकिंग आउट ऑफ एयर जो है उसमें बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल को आप देखें तो ये बिल्कुल गहराई में पाया जाता है, यानी कि इनिशियली रिब्स हैं, पसलियां पसलियों के बीच में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और उसके नीचे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। तो ये बिल्कुल डेप्थ में नीचे पाए जाते हैं और जो बेसिक इनका फंक्शन है कि ये रिब केज को पुल डाउन करते हैं, यानी कि बेसिकली जो रिब केज है, यानी कि अब हम सांस को जब अंदर खींचते हैं, ऐसे आप अंदर खींच रहे हैं तो ये बेसिकली रिब केज क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, धंस रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से आएगी। और इसके अलावा जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है उसके दो और इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी कहा जाता है कि ये बेसिकली स्पीच में हेल्प आउट करता है। जब आप बोलते हैं तो आप में जो एनर्जी लग रही होती है वो बेसिकली इन्हीं मसल्स की वजह से लग रही होती है। फिर इसके अलावा सिंगिंग करते हैं तो तब भी ये मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी आगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल मीन बैरूनी साइड पे, तो ये बेसिकली ये डेप्थ में अंदर पाए जाते हैं, ये बैरूनी साइड पे पाए जाते हैं लेकिन रिब्स के बीच में पाए जाते हैं। तो इनको हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन ये कि इट एलिवेट्स द रिब केज। ये रिब केज को क्या करता है, एलिवेट करता है, ऊंचा करता है। बेसिकली जब ऐसे आप सांस ऐसे छोड़ते हैं तो बेसिकली रिलैक्स होता है रिब केज। तो जब रिब केज रिलैक्स होगा तो उस एलिवेट होगा, तो फिर उससे क्या होगा कि ये लंग्स को हेल्प आउट करेगा एक्सपैंड करने में, ताकि वो एयर को टेक कर लें, एयर को अंदर एब्जॉर्ब कर लें। फिर उसके बाद हमारे पास जो मसल आता है यहाँ पे, एब्डोमिनल एरिया का जो मिडल पार्ट है, इसको हम सिक्स पैक मसल भी कहते हैं और इसका नाम जो है रेक्टस एब्डोमिनस है। और रेक्टस एब्डोमिनस के भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और रेक्टस एब्डोमिनस का सबसे जो पहला फंक्शन है वो बेसिकली क्या है कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी जो है इन सब को क्या करता है, होल्ड करता है, मजबूती से होल्ड करता है, जकड़े रखता है ताकि उनमें डिस्टर्बेंस ना हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, कीप योर बॉडी स्टेबल। और ये जो आपकी बॉडी को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है और इस वजह से हम इसको सिक्स पैक मसल भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट आता है ये हमारे पास इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल होता है, जो इसके बिल्कुल लेटरल साइड पे पाए जाते हैं एब्डोमिनल वॉल के। और इनके जो बेसिक फंक्शन है ये हेल्प्स इन एब्डोमिनल प्रेशर। जो एब्डोमिनल प्रेशर बनता है वो बेसिकली किसकी वजह से बनता है, वो इंटरनल ओब्लिक मसल्स, एब्डोमिनल ओब्लिक मसल्स की वजह से बनता है। और जो अदर मूवमेंट्स है ट्रंक की उनमें भी ये हेल्प आउट करता है। एक दफा फिर इसको हम शॉर्ट में सिंगल सेंटेंस में जिसको हम रिपीट अगर करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रेपीजियस मसल को, हमने डिस्कस किया। ट्रेपीजियस मसल क्या करता है, बेसिकली आपके शोल्डर और आर्म को मूव करता है। सेकंड मसल हमने डिस्कस किया पेक्टोरालिस मेजर को, जो बिल्कुल बड़ा मसल है बेसिकली चेस्ट का। इसके तीन फंक्शन हमने डिस्कस किए। एक तो ये एबडक्शन करता है, यानी कि बाजू को जब क्लोज लाते हैं तो ये एबडक्शन में हेल्प आउट करता है। फिर इसी तरह डिप्रेशन और रोटेशन ऑफ आर्म, यानी कि बाजू को नीचे डिप्रेस करना और उसको रोटेट करना, ये इसके जिम्मे में आता है। फिर उसके बाद पेक्टोरालिस माइनर आता है। पेक्टोरालिस माइनर के भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने डिस्कस किए। एक तो ये शोल्डर को डाउनवर्ड डाउनवर्ड और फिर शोल्डर को फॉरवर्ड, दो मूवमेंट कराता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया लेटिस्मस डोर्साई मसल को। लेटिस्मस डोर्साई बेसिकली रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स कहलाता है, ये बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करता है। लेटिस्मस डोर्साई के बाद आ जाता है सीरेटस एंटीरियर मसल आ जाता है। सीरेटस एंटीरियर फर्स्ट रिब से ओरिजिनेट होकर आठवीं रिब तक आता है। और सीरेटस इंटीरियर का जो बेसिक फंक्शन है वो स्कैपुला को टुवर्ड्स द थॉरेक्स लेके आता है, यानी कि ये स्कैपुला आपका है तो इसको आप थॉरेक्स की तरफ, अंदर की तरफ लेके आएंगे इस स्कैपुला को, शोल्डर को। तो ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली इसकी वजह से हो रही है, सीरेटस एंटीरियर की वजह से हो रही है। अब उसके बाद आप आ जाए लास्ट मसल इस साइड पे आता है, वो एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल है।
ये बेसिकली जो है ना एक्सटर्नल एरिया की तरफ पाया जाता है एब्डोमेन के, और ये रिब्स से आके नीचे पेल्वस तक आता है। और इसका मेन फंक्शन ये ट्विंक इट बेसिकली ट्विस्ट द ट्रंक, यानी कि आप ट्विस्ट करते हैं, जो बेसिकली ये मूवमेंट सारी आपकी ये एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल करता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इन मसल्स के ऊपर। तो यहाँ सबसे टॉप पे अगर आप देखें तो ये बेसिकली स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है। स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये टिल्ट करता है हेड को, और इसके अलावा नेक की जितनी मूवमेंट है वो कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स आ जाते हैं हमारे पास। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ना आपकी बिल्कुल डेप्थ में पाए जाते हैं, और इनका जो बेसिक फंक्शन है ये पुल डाउन द रिब केज को नीचे की तरफ रिब केज को खींचते हैं, और इसके अलावा ये सिंगिंग और स्पीच में हेल्प आउट करते हैं। एक्सटर्नल जो इंटरकॉस्टल मसल्स है ये बेसिकली क्या करेंगे, रिब केज को एलिवेट करेंगे ताकि जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो और वो एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। फिर सिक्स पैक मसल हमारे पास आ जाते हैं जिसको हम रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस के भी हमने दो फंक्शन डिस्कस किए। फर्स्ट तो ये कि जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सारी चीजों को टाइटली फर्मली क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। और सेकेंडली जो है ये बेसिकली आपकी बॉडी को स्टेबल करते हैं। और ये जो सिक्स पैक मसल है ये आपको बेसिकली उन स्लिम लोगों में नजर आएगा जिनका एब्डोमिनल एरिया बिल्कुल अटैच होगा, यानी कि सिंपल वाला है जिनका पेट बिल्कुल साथ लगा होगा, उनके या बॉडी बिल्डर्स जो हैं वहां पे आप देखेंगे तो सिक्स पैक उनके नजर आते हैं एब्डोमिनल एरिया में। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे हमारे पास जो आता है वो इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल आता है। इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल के भी दो फंक्शन हमने डिस्कस किए। एक तो ये क्या करता है कि एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बनाता है, एब्डोमिनल प्रेशर बनाता है, और अदर जो मूवमेंट्स है ट्रंक की उसमें हेल्प आउट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली जो ट्रंक का एंटीरियर व्यू है वो हमने डिस्कस किया, और उसके ऊपर जो मसल्स लोकेट होते हैं और उन मसल्स के जो फंक्शन है वो आज हमने डिस्कस किए। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।